తల్లిదండ్రులు కావాలని మీ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ వారి తక్కువ ధర సంతానోత్పత్తి చికిత్సతో అపాయింట్మెంట్స్ కొరకు కాల్ చేయండి 7825893600. కాసేపట్లో లోక్సభ ముందుకు ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ బిల్లు రాబోతోంది. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బిల్లును ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. ఈ బిల్లును ఆ ప్రభుత్వం సహా విపక్షాలన్నీ కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఈ బిల్లుకు ఇప్పటికే కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ప్రస్తుతం లోక్సభ సమావేశాలను లైవ్ లో చూద్దాం. संक्षिप्त 4 बिंदु पे सर, एक बिंदु अब पता नहीं आप माइक दिया माइक चालू है आपका? नहीं, ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आदत मत बनाओगे हमेशा। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 3 नंबर सर, आप विधायक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरों पर नियंत्रण नहीं कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं सर, और कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बोलता है तो तुरंत कंसिडरेशन करने के लिए बोल दीजिए, हम मेरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तैयार हैं। एन के प्रेमचंदन जी, यस, आपका विषय, आप तो इस विषय पर लास्ट सर, ये विधायक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार में उपराज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता है। प्रेमचंदन जी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर। हमेशा सदन की नियम प्रक्रिया के तहत आप बोले। जब एक नहीं माननीय आप नेता हैं, मैं पर्याप्त अवसर आपको पर्याप्त समय दूंगा जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं के तहत है, जिस विषय पर आप आपत्ति करना चाहते हैं उस विषय पर आपत्ति बोले, नियमों के तहत बोले। सर I vehemently oppose the government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 on 3 grounds. आप तो नियम से बोलोगे ना? हम नियम से बोला है। रूल्स की बात बोलना। रूल्स के बाद बोला है सर। Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am questioning the legislative competence of the government in having the legislation of the bill number 1. Sir, it is against the principles of federalism which is being envisaged by the Constitution of India. Sir, federalism is one of the basic features of Indian Constitution. An elected government in the state of Delhi, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the political political leadership and the elected. Sir, please, second point. क्या सुने आपकी? आप 72 के नियम में बोलो, व्यवस्था दे रहा हूं आपको। This is going to override the Supreme Court judgment that will never pay 2023 government of NCT Delhi versus Union of India. Sir, let me read the Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment says that the state government. No, this is a I am talking on the legislative competence. Prahlad Joshi ji, I am talking on the legislative. Sir, Rule 72 says if a motion to leave the introduced the bill is opposed, the speaker, if thinks fit, after permitting the brief statement from the member who opposes the bill, the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion, provided that where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the house, the speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't, it is, okay. Parliament
is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. Sir, the second point is, it is overriding the Supreme Court judgment dated 11 May 2023. The Supreme Court judgment is very clear that Delhi state government is having absolute power, administrative as well as legislative supremacy is with the state government of Delhi. The intent of this bill is to override the Supreme Court. Sir, the third point. Sir, the third point. Please. Why you are having it? Sir, the third point. 239, sir, through 239, clause 7 of Constitution of India. Sir, so far the last 30 years of Indian experience, so far the clause 7, 239 article of the Constitution has not been invoked. Here in the preamble, if you go to see, there are 2 pages of preamble. In preamble, sir, very valid point, sir. In preamble, nowhere it is stated that why clause 7, 239 is invoked is not being stated in the preamble. Preamble is incomplete. Therefore, I strongly oppose the bill in introducing. स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament, because the Supreme Court passed a judgment in CA number 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of government of NCT of Delhi versus Union of India. Now, to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. Sir, हो जाएगा सर। सर, अब प्रेमचंद्रन को 4 बार मौका दिया, मुझे भी 1-2 बार दीजिए। सर, complete. Sir, I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the Union Capital Territory of Delhi under Article 239A of the Constitution. कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा, चलाओ सदन पूरा, सबको मौका देंगे। अध्यक्ष पूरा समय, कल आप सबको पूरा समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको भी पता है, पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता। आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता। ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए।
चाहता हूं सर, मुझे आपका- संरक्षण की आपकी आपका आवश्यकता नहीं है। संरक्षण चाहता हूं नो, कि सर। आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है, और ये जो कॉल एंड सगदर का जो लिखा है कि when a leave of house to the moving of a motion has been granted, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. It will be challenged, and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive श्री तरूर जी। नहीं है. Thank you, sir. I too would like to oppose the introduction under Rule 72 of the Rules of Procedure, and particularly on the issue of legislative competence. I have 4 brief points, sir. First, the bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government, and by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number 2, sir, just 4 quick points. Sankshipt mein bol raha hu. Number 2, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, sir, the fact is that it's their responsibility. The legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility, sir, of the government for its own officers. You cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. I am before you, sir. I am before you. Sir, actually, the government is day by day going autocratic. That is what everybody feels here. Sir, ever since the first no confidence motion has brought in to this house in 1956, there is no such precedent to discuss any substantive motive before the discussion of. आप इस विषय बिल पे बोलिए। Before the discussion No. of no contest motion taken. Pinaki Mishra ji. Moreover, it is very much against the judiciary, which the Supreme Court has already pronounced. Honorable, पिनाकी मिश्रा जी। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, there are some very, very erudite members of Parliament here who know the law well. I'm surprised that when legislative competence is being discussed under under Rule 72 proviso, that there is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages, the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Now, kindly see what the Supreme Court in para 95 has said. It concludes about legislative competence. Please understand, the court says, however, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in that law. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? How do you I can understand you vote against it. You can vote against it. You can vote no. On a point of law. On a point of law, you cannot. On a point of law, you cannot challenge this. Legislative competence is there. ओके, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को
संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए